Hello students, today's our topic is area and volume, that is chapter number 9. Before reading to the area and volume, firstly we will discuss about what is perimeter. Perimeter is the sum of lengths of all the sides of a closed plane figure. Like this is a triangle having sides 4 centimeter, 5 centimeter and 4 centimeter. Then perimeter of this triangle will be sum of length of all the sides. That's 4 plus 5 and plus 5. This triangle is a closed figure. Then this square is also a closed figure. And if we want to find out perimeter of a square, then the formula for perimeter of square is 4 multiply side, because if we take 2 plus 2 plus 2 plus 2, then we will get 8 centimeter. And in the similar way, if we get the perimeter from formula 4 multiply side, that is also 4 multiply 2, and we will get 8 centimeter. Then this rectangle is also a closed figure. If we want to find out perimeter of rectangle, then we will take the length 4 centimeter and 4 centimeter and 2 centimeter and 2 centimeter. Then the formula can be derived from here as 2 multiply length plus 2 multiply breadth, and this 2 can be taken out common from this, and we will get 2 multiply length plus breadth. ऐसे ही बेटा अगर हमें इस फिगर का पेरीमीटर अगर हमें निकालना है, then we can find out by formula 50 plus 50, 60 plus 60 and plus 60. We can add all the sum of length of all the sides. ऐसे ही अगर हमें इस फिगर का पेरीमीटर निकालना है, then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. We can find out as 8 multiply 15, because this is an octagon. In the similar way, 57 plus 57 plus 42 plus 42, जैसे मैंने रेक्टेंगल का फॉर्मूला आपको बताया था, that is 2 multiply length plus breadth, that is 2 multiply 42 plus 57, and you can solve this equation. In the simple way, the perimeter is the length of boundary of the closed figure. किसी भी closed figure की जो boundary की length होती है, that is called as perimeter. Then if we come at the topic area, the area of closed figure is the amount of surface covered by it. किसी भी closed figure से जो उसका surface, closed figure का जो surface covered होगा, that total surface is called as its area. Area is the space occupied by a flat surface or surface of an object. अगर हम लेते हैं this is rectangle and this is triangle,
तो इसके अंदर का जो स्पेस है बेटा, जो ऑक्यूपाइड स्पेस है रेक्टेंगल और ट्रायंगल का, इसके अंदर का जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड एरिया. एरिया मेजर्स द स्पेस इनसाइड द शेप. Like in earlier classes, we found the area by counting the number of squares. अगर हमारे पास these are the small squares having each side 1 unit. जैसे हमारे पास एरिया का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, ऐसे ही हम एरिया ऑफ अ स्क्वायर, अगर हमारे पास किसी स्क्वायर की साइड है 1 तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं दैट इज़ 1 इन यूनिट स्क्वायर, दैट इज़ 1 यूनिट स्क्वायर. ऐसे ही अगर हमारे पास छोटे छोटे स्क्वायर्स में किसी भी फिगर को डिवाइड कर रखा है तो हम उस फिगर का एरिया बाय काउंटिंग नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकाल सकते हैं. जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. एरिया ऑफ दिस फिगर इज 12 यूनिट स्क्वायर. In the similar way, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12. This figure is also having 12 square unit area, and in this figure 1 2 3 4 5 6 7 8, and this figure is having area 8 square units. जैसे हम किसी भी लेंथ को मीटर, सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर में काउंट करते हैं, ऐसे ही एरिया की यूनिट होती है व्हाट इज़ द यूनिट फॉर एरिया. लाइक इफ़ वी मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर देन 1 1 जा 1, and centimeter and centimeter will becomes square centimeter.